We have more inputs coming in from across the international shores because remember, tensions are soaring high in Iran. This as reports emerge of nearly 2,000 deaths in a brutal crackdown on anti-government protests. Meanwhile, US President Donald Trump has urged demonstrators to keep going on. In fact, he's also assured them that help is on its way, escalating already high tensions with Tehran. Iran's defense minister has already warned of a powerful response to any US aggression. Top Iranian official Ali Larijani has blamed Donald Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu for the bloodshed. Remember, the Iranian regime has refused to back down. In fact, they have threatened the US president that there will be a befitting response if US does intervene. Meanwhile, 26-year-old Irfan Sultani is facing execution for protesting against its supreme leader, Ayatollah Khamenei, marking the first such sentence in the uprising. And amid a 130-hour internet blackout, Elon Musk's SpaceX has stepped in. It's offering free Starlink satellite access to Iranians seeking to stay connected. Remember, this happens shortly after the US president assured that he will look into the internet blackout and will also reach out to Elon Musk. Listen to the reactions. همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما رو جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتاً تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکنن. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون نمونده. به مردم هرچه زودتر بپیوندید. All right, let's quickly go across to Siddhant, who continues to stay with us. So, Siddhant, the moot question for us as Indians is, will there be a US intervention as has been threatened? What are the options before the United States? And why should India be concerned? Well, that's right, Akanksha. So from last 48 hours, we are getting mixed signals from the United States. In fact, day before yesterday, U.S. Senior officials, press secretary, President Trump himself said that they believe in diplomacy first. Iranians have reached out to them, etc., etc. In fact, there were multiple reports saying that Iran is ready to discuss its nuclear program again with the United States. Now, yesterday again, there were chatter about possible military attack by the United States, cyber attack, things like that. In fact, press secretary said that all options are on the table. In fact, there was one high-level meeting also which took place in the White House where President Trump was briefed about the situation in Iran. Then series of posts made by President Trump saying that the help is coming your way, keep protesting, take over the institutions, make Iran great again with that message. So right now, perhaps the whole world is watching the next move of the United States very, very closely, Akanksha, because as I said, that there has been mixed signaling being done by the United States. So one cannot predict what's going to be the next move, whether there's going to be a possible military intervention or a cyber attack, or United States and Iran will be coming to the tables for talks. Because interestingly, Steve Witkoff had a conversation with the Iranian Steve Witkoff, in fact, who was last time involved in handling this situation in Iran, in fact, met Reza Pahlavi as per the report. So a lot of developments are taking place, right.
but very difficult to predict what will be the next move of United States. Absolutely, and what is going to be the impact of that move is perhaps also something that the US needs to be extremely mindful of. Many thanks to you, Siddhant, for putting that into perspective for us. Now, amid these escalating protests, Dr. Mohammad Momin Khan, who is the Vice President of the All India Medical Students Association of Jammu and Kashmir, spoke exclusively to CNN News 18. This with regards to the safety concerns for India's medical students in Iran. He had that conversation with Siddhant. Listening. So viewers, joining me now is Mr. Dr. Mohammad Momin Khan. He is in touch with the Indian medical students stuck in Iran. He's in regular touch with them. We'll be talking to him about their safety and whether there is any plan of bringing them back home. क्या कुछ आप बता सकते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो कि ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं? कितनी संख्या है उनकी, और क्योंकि वहां पे 130 घंटे से ज्यादा का इंटरनेट ब्लैकआउट है, तो ऐसे में बातचीत होने में भी कुछ दिक्कतें आ रही होंगी. क्या वो सेफ हैं, किन इलाकों में है, क्या कुछ बता सकते हैं आप हमें? जी देखिए, क्या है, जो हमारे इंडिया से अराउंड स्टूडेंट्स वो नियर अबाउट 3000 है. उसमें से जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इट्स अराउंड लाइक 2000 के टचिंग में है. और मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से. मोर देन लाइक 1600 स्टूडेंट्स. ये कौन से इलाकों में हैं और क्या कुछ बता रहे हैं? क्या तस्वीर है इस वक्त ईरान की? क्योंकि 2 दिन से तो बताया जा रहा है सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आई है, पर उससे पहले जिस प्रकार से आगजनी का मंजर देखा गया, जिस प्रकार से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया गया, बताया जा रहा है ईरानियन फोर्सेस ने भी बहुत लोगों को, प्रोटेस्टर्स को पे गोली चलाई है. क्या कुछ जानकारी वो दे रहे हैं आपको? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं मेनली जो तेहरान में मतलब स्टडी करने जाते हैं, तो आप जानती है थर्सडे नाइट के बाद वहाँ इंटरनेट शट डाउन हुआ था कम्प्लीटली. और इवन दो कम्युनिकेशन जो मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेशनल कॉल्स, दे वर आल्सो सस्पेंडेड. तो स्टूडेंट जो है यहाँ, मैंने उनके पेरेंट्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इवैक्यूएशन के वक्त हमारी एसोसिएशन ने बहुत हेल्प की थी इनकी. तो जो इंटरनेट शटडाउन की वजह से बहुत पैनिक और एंजाइटी क्रिएट हुई है अमंग द पेरेंट्स. तो कुछ स्टूडेंट जो है मतलब वो इराकी बॉर्डर के पास फ्राइडे को चले गए थे और उन्होंने वहां से मुझसे कम्युनिकेट किया था. तो मैंने वो जो उनने अश्योरिटी जो मतलब बोला था, वो अभी तक मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स वो कम्प्लीटली अभी सेफ है वहाँ पे. कुछ स्टूडेंट्स टर्की बॉर्डर पे भी चले गए थे उर्मिया यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने वहां से भी हमें मैसेज दी कि मतलब दे ऑल आर सेफ, देयर इज नथिंग टू वरी. और वो मैसेज हमने उनके पेरेंट्स को कन्वे की थी. तो इस मामले में, इस पूरे मसले को लेकर आप एम्बेसी से टच में हैं? आप लोग वहां से गाइडेंस मिल रहा है? कुछ भारत सरकार से टच में हैं? जी, भारत सरकार और एम्बेसी का पूरा साथ है इस चीज़ में. और जो हमारी वहाँ इंडियन हाई कमीशन इन ईरान है तेहरान में, उन्होंने भी एडवाइस दी अपने स्टूडेंट्स को, जो मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उनने मतलब हर यूनिवर्सिटी में एडवाइस दी जो है वो जारी की है, जिन्होंने उन्हें स्टूडेंट्स से ये अपील की है कि वो इंडोर में ही रहे. अमेरिका की तरफ से क्योंकि लगातार धमकियां आ रही हैं कि वो इंटरवीन करेंगे, मिलिट्री अटैक कर सकते हैं या साइबर अटैक कर सकते हैं, इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं, तो वहां क्या चर्चा है? ईरान में क्या चर्चा हो रही है इसको लेकर? देखिए, स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ वो बोल रहे हैं वहाँ पे जो मतलब स्टेबल है कंडीशन. लेकिन अगर ये चीज़ें होती है कहीं से मतलब अटैक होते हैं, तो हमारी इमीडिएट डिमांड रहेगी जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उन सबको इवैक्यूएट किया जाए टू बैक टू द इंडिया. More than 2 weeks into Iran's nationwide protests, and demonstrators remain defiant. This despite a harsh crackdown. In fact, an ongoing internet blackout has already made it difficult to grasp the full scale of the unrest. What began as outrage over inflation and rising living costs has now exploded into a wider anti-government movement in Iran. CNN's Jumana Karadeshe she brings us a report. Let's have a quick look. From behind the walls of the Iranian regime's censorship, a chilling video has emerged. Every movement of what may be a hidden camera reveals a terrifying picture of what's been unfolding on the ground. They butchered him, this mourner wails. The camera drifts past grief, not lingering long enough for us to be able to tell the stories of loss and pain of so many.
who gathered at the Kahrizak Forensic Medical Center outside Tehran, searching among rows and rows of body bags that line the courtyard for loved ones missing. State media had its own pictures and narrative from the Kahrizak Forensic Institute, reporting the majority of the bodies are those of, quote, ordinary citizens. They blame their deaths, like the protest, on foreign-backed terrorists carrying out what they say are indiscriminate killings. These pictures the regime decided to air, perhaps a warning to those who dare take to the streets. It's almost impossible for us to get real-time updates from Iran. The regime's shut down communications across the country on Thursday, just as nationwide protests against the clerical establishment drew larger crowds to the streets of every province. It's a tactic out of its playbook on crushing dissent, cover it's used in the past to unleash bloody force. In this one location, an estimated 250 bodies, with hundreds more confirmed killed elsewhere, according to activists. The world now braces for what may come when Iran finally emerges from the dark. All right, with that, we're stepping into a quick break. Stay tuned to CNN News 18 as we return with the latest news and updates.